Vedas are glorified as unwritten even by Sangam Tamil poets. Such glorious Vedas talk about the four objectives of life: Dharma, Artha, Kama, and Moksha. The last part of the Vedas is the Upanishads, which talk about moksha in detail. Hence, they are called Vedanta. This Upanishad is called Questioning or Prashna Upanishad, where Sukesha disciple asks his Guru Pippalada about the self and the Purusha, the divinity manifested inside one. Realization of the self, Purusha, is covered or eclipsed by the 16-part illusive energy, Maya, and ignorance of that wisdom, Avidhya. This Upanishad has been declared one of the 10 primary Upanishads by Sri Rama in the Muktika Upanishad. Let's enjoy these blissful verses of realization. This section explains that the Supreme Being is not distant but resides within the human body. It describes how all worldly attributes, the 16 kalas, arise from and eventually dissolve back into this one immortal consciousness. This makes our Sanatana Dharma universal and the Vedas the root of all existing beliefs today. Hence, our Bharathavarsha becomes a destination for all spiritual seekers seeking the knowledge of that self or Athma. The quest for truth. Atha hainam Sukesha Bharadvajah papracha Shodashakalam Bharadvaja Purusham Vetha Satushnim Rathamaruhya Pravavraja Tam Tva Pritchami Kvasau Purusha Iti. Sukesha Bharadvaj tells Pippalada that a prince once asked him about the person of 16 parts. Unable to answer and unwilling to lie, he remained silent. Now he asks the sage, "Where is that person?" सुकेशा भारद्वाज ने पिप्पलाद से कहा कि एक राजकुमार ने उनसे 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में पूछा था। उत्तर न जानने पर वे चुप रहे, चूंकि झूठ बोलना पाप है। अब वे पूछते हैं, वह पुरुष कहाँ है? சுகேஷா பாரத்வாஜர் பிப்பலாதரிடம், 16 கலைகளை உடைய புருஷனை பற்றி ஒரு இளவரசன் கேட்டான். பொய் சொல்ல விரும்பாமல் நான் மௌனம் காத்தேன். இப்போது கேட்கிறேன், அந்த புருஷன் எங்கே என்றார். The dwelling of the divine. தஸ்மை சஹோவாச்சே हैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन् नेता षोडशकला prabhavantiti. Pippalada replied, O gentle youth, that person from whom these 16 parts originate is right here within this very body. पिप्पलाद ने उत्तर दिया, हे सौम्य, वह पुरुष जिससे ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, इसी शरीर के भीतर ही विद्यमान है. पिप्पलादर பதிலளித்தார், அன்பிற்குரியவனே, அந்த 16 கலைகளும் யாரிடமிருந்து தோன்றுகின்றனவோ அந்த புருஷன் இதோ இந்த உடலினுள்ளேயே இருக்கிறான். The thought of creation. स ईक्षाञ्चक्रे कस्मिन्नह मुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामिति. The Purusha thought to himself, by whose departure shall I depart? And by whose staying
Shall I remain established? उस पुरुष ने विचार किया, किसके शरीर से बाहर निकलने पर मैं निकल जाऊंगा और किसके स्थित रहने पर मैं भी स्थित रहूंगा. அந்த புருஷன் சிந்தித்தான். நான் எதைக் கொண்டு வெளியேறுவேன்? எது நிலைத்திருந்தால் நான் இந்த உடலில் நிலைத்திருப்பேன். The 16 parts sapranamsrijat pranat shraddhamkham vayurjyotirapah prithivindriyam manah annamannadviryam tapo mantraha karma loka lokeshu cha namacha. He created prana, life force, then faith, space, air, fire, water, earth, senses, mind, food, strength, penance, mantras, action, worlds and names. उन्होंने प्राण रचा, फिर श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, शक्ति, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम की रचना की. அவன் பிராணன், நம்பிக்கை, பஞ்சபூதங்கள், இந்திரியங்கள், மனம், உணவு, வீரியம், தவம், மந்திரம், கர்மா, உலகம் மற்றும் பெயர் ஆகிய 16 கலைகளை படைத்தான். The return to the source. स यथेमा नद्यः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति. As rivers flow into the ocean and lose their name and form, so do these 16 parts dissolve into the Purusha, leaving only the immortal, partless self. जैसे नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही ये 16 कलाएं पुरुष में विलीन हो जाती हैं और वह अमर पुरुष ही शेष रह जाता है. ஆறுகள் கடலில் கலந்து தங்கள்